Kanika Khanna Bhatia, a digital creator, a mom influencer. I welcome you all to today's live session. I'm very happy to announce that today I have very special guests for this live session. So we have Dr. Deepika Goel and Dr. Mayna to discuss a very important topic, that is depression during pregnancy and how to deal with it. So, before we begin, I want to give our audience a general insight into what Baby Chakra exactly is. Baby Chakra is the India's leading platform for pregnant and all expecting mothers to bring up a query and have valuable and helpful information delivered by the experts. So, I would like Dr. Deepika Goel to please introduce yourself. Hi, thank you, Kanika. My name is Deepika Goel, as Kanika has already introduced. I am a counseling psychologist. I practice out of Bangalore and I see clients all over the world. I have a website that names kahiandkahi.com. And yeah, I primarily see couples, parents, and expectant and mothers for various kind of psychological issues that they might face in my practice. Yeah, thank you. Thank you, Kanika. So now I would like Dr. Mayna to please introduce yourself. Sure. Hi, Kanika. Hi, everyone. My name is Dr. Mayna Jain. I am a consultant homeopath and a counselor. My clinic is primarily in Parel, Mumbai. Other from that, I also do online consultations. We see all kind of chronic cases, allergic cases, cases of depression, anxiety, especially towards that, where counseling along with homeopathy makes wonderful changes. So thank you so much for your brief introduction. So thank you for joining us today and sparing some time from your such busy schedule. So let's start with this session and bring some lots of useful and helpful information to our viewers. So pregnancy basically is brings a mix of emotions, and it is not always good for everyone. It can be even harder if you are dealing with depression or anxiety. Depression is a condition that affects your emotional state. It can cause you to have feelings of sadness and isolation, disconnection. So let's discuss this topic in the best way to indulge in the conversation with our experts in the panel today, and they will address this topic in depth. So we shall begin this session now. So my first question is to Deepika ma'am. What are the signs and symptoms of depression? Kanika and everybody, some of the signs and symptoms of depression could be that the person starts to suddenly feel, as you mentioned, very sad, like nothing excites you, nothing interests you, suddenly feeling a loss of interest into everything, things that which would previously interest you, you would lose interest in them. Then feeling of isolation, a person feels that as if he or she is absolutely alone in the world, there is no one who understands her, right? And then there are persistent low moods, which are a very significant symptom and sign of depression. That if more than 2 weeks and above, if you're feeling persistently low about everything, that there is no interest in anything, loss of pleasure, feeling of isolation, constant feeling of sadness, these are some of the symptoms and signs to be noticed to understand that you might be undergoing depression. However, a clear-cut diagnosis can only happen after speaking to, let's say, a psychologist or a psychiatrist. But these are certain initial signs that you might know that this might be depression. Yeah. Okay. So my now next question to you is, Dr. Mayna, what causes depression? So I think, hello Kanika. So basically, depression, as we understood from her, is something when there is changes. So the term depression is actually used very casually. Like people who just come up and suddenly say, I have depression or I am depressed, which is not it is. We need to see what it is. Is it really depression clinically, or it is just the feeling of being low? And in pregnancy especially, a woman goes through a lot of changes into her body, especially there are hormonal changes which causes lots of stress on her body. The feeling, there are body changes, you may suddenly feel that I am not looking good enough. The family support, your environment changes suddenly.
your working pattern changes. All this thing creates lot of changes into your stress environment and body, which causes this feeling of depression. And then suddenly there are history people who are basically of that temperament who easily get depressed or sad. They're more tend to get depressed. So thank you, ma'am, for this information. So now I would like to ask my next question to Dr. Mayna, that are you at a risk for depression? How do we find out? Are you at a risk of depression? There are various factors into it. मतलब इफ वी हैव टू गो तो हम समझेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं। एक होता है कि एक पर्सन को पहले से ही हिस्ट्री है, मतलब उसको पहले कभी कोई इंसिडेंट की वजह से डिप्रेशन रहा है या उसके फैमिली में रहा है कि मदर को सिस्टर को, तो फिर वो ज्यादा रिस्क पे होता है टू गेट डिप्रेशन। ये भी एक देखा गया है कि पीपल हु हैव हैड प्रेगनेंसीज व्हिच वर अनवांटेड और आउट ऑफ रीजंस व्हिच वर नॉट एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी, उनको ज्यादा डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फैमिली सर्कमस्टांसेस, सोशल सिचुएशंस, आप घर में अकेले रह रहे हैं या उतना इनफ एडिक्वेट सपोर्ट नहीं है, so you are not able to cope up with the changes that are happening around. That can also lead to depression. Apart from that, आपको इनिशियल प्रेगनेंसी में पता चले कि कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया है, तो वो एंजाइटी की वजह से कि क्या होगा, या फिर कोई हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस मिसकैरेज या प्रीवियस ऐसे कोई इंसिडेंट आपके साथ प्रेगनेंसी में हुआ हो, या people who have been on long term infertility treatment, IVF, would have this thing. Okay. Okay. Thank you, All ma'am. good. Thank you, ma'am, for this insightful, information. So my question to Deepika, ma'am: can depression during pregnancy affect you and your baby? So it does not directly impact depression, does not directly impact the baby, is what I understand. However, it can definitely impact the mother's ability to take care of herself and the mother's ability to take care of the baby. And that can actually impact the baby, the fetus itself. So जब माँ डिप्रेस होती है तो वो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाती, अपनी एक्सरसाइजेस का ध्यान नहीं रख पाती, बच्चे आपको कितना एडिक्वेट खाना है या क्या ऐसी एक्टिविटीज करनी है जिसकी वजह से आपका जो बेबी है जो आपके पेट में है वो हेल्दी रहे, उन सारी चीजों का ध्यान ना रख पाने की वजह से बच्चे को एक जो जो इम्पैक्ट होता है वो उसको बेसिकली नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। प्लस ऐसा डॉक्टर्स everybody says and it is clinically proved also कि बच्चा आपके emotions को sense कर सकता है। Even when the baby is in the uterus, baby can sense mother's emotions. So if mother is persistently sad or depressed, then there can be some amount of emotional impact that the baby can absorb, and that can impact at some point in time baby's mood as well, and can also make the baby clinically predisposed to depression. Something that Dr. Mayna has said कि अगर आपके फैमिली में कोई हिस्ट्री रही है तो बेबी के लिए वो एक जेनेटिकली प्रीडिस्पोज फैक्टर बन जाता है कि आगे चल के वो अपनी जिंदगी में कभी अगर उसको डिफिकल्ट टाइम्स आएंगे तो that baby can be predisposed to depression. So these are some of the direct and indirect impacts that can happen if the mother is depressed. Okay, thank you so much, ma'am, for this information. So now my question to Dr. Mayna is the depression treatable? Absolutely, depression is absolutely treatable with all terms. There are everything. So it depends. अगर mild depression है तो बहुत सारी चीजें हैं. Counseling जो होता है that is the best thing that can be done. उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, थेरेपीज होती है, सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, हम फैमिली को ट्रेन करते हैं हाउ टू डील विद इट। और अगर डिप्रेशन इज ऑफ सीवियर रेंज, वी हैव मेडिकेशंस, वी हैव थेरेपीज, so everything is absolutely treatable with without medication. So yes, depression is absolutely treatable और जिसको भी है should absolutely go to the healthcare provider. आप जाइए, डायग्नोज कराइए और राइट टाइम पे राइट एक्शन लीजिए उसके। Okay, thank you so much, ma'am. So my next question to Deepika ma'am is it compulsory to be with a person if the pregnant mother is in depression? राइट, सो आप पूछ रहे हैं कि प्रेग्नेंट मदर के साथ रहना जरूरी है किसी ना किसी को। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द मदर इज अंडरगोइंग डिप्रेशन देन गिविंग हर एडिक्वेट सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनके साथ किसी ना किसी का होना या उनसे बात करना या कई बार सिर्फ जस्ट होना और उनको डेली एक्टिविटीज में सपोर्ट करने से, जैसा कि डॉक्टर मायना ने भी कहा कि माइल्ड डिप्रेशन तो बहुत हद तक आपका किसी के साथ रहने से भी
चला जाता है, if it is very mild. So the feeling of being supported कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है, मेरे साथ कोई बातचीत करने वाला है, मुझे हेल्प करने वाला है, उससे बहुत सारी चीजें हल हो सकती हैं या फिर उसको जल्दी ठीक करने में बहुत मदद मिल सकती है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई हमेशा उस मदर के साथ रहे. Okay, so thank you, ma'am. So my question again is, how long does it take to come out from depression? You're asking me? Yes. Right? So it really depends, कनिका. कुछ लोगों को डिप्रेशन से बाहर आने के लिए कुछ दिन, कुछ हफ्ते और कुछ लोगों को कुछ महीने भी लग सकते हैं या साल भी लग सकते हैं. Okay. बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर ये हीलिंग पीरियड डिपेंड करता है. आपको सही टाइम पे सही मदद मिली या नहीं मिली, आपका सपोर्ट एनवायरनमेंट कैसा है, आपका आपने सही तरह के डॉक्टर को कांटेक्ट किया, डायग्नोसिस कराया या नहीं कराया. अगेन आपकी हिस्ट्री उस बीमारी को लेकर कैसी है, क्या आप प्रीडिस्पोज्ड हैं डिप्रेशन को लेकर, या पहले अगर इस तरह के इंसिडेंसेस हो चुके हैं तब कितना समय लगा था उससे निकलने में. इंक्लूडिंग पेशेंट की अपनी पर्सनालिटी का भी इस हीलिंग प्रोसेस के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. क्या आप पॉजिटिव लुकिंग हैं या आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं. तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये तय होता है कि आपको कितना समय लगेगा डिप्रेशन से बाहर आने में. लेकिन गुड न्यूज ये है कि ये ट्रीट हो सकता है. इट इज एब्सोल्युटली ट्रीटेबल विद द राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, विद द राइट टाइमली अप्रोच. इट इज एब्सोल्युटली ट्रीटेबल. बट मैम, मिनिमम कितना टाइम इज लाइक एक्सपेक्टेड कि डिप्रेशन अगर सपोज है तो इट विल टेक एटलीस्ट दिस मच ऑफ टाइम? तो मैं आपको क्लिनिकली बता सकती हूँ. अगर किसी को क्लिनिकल डिप्रेशन है एंड दे गो मेडिकल रूट, तो कम से कम 4 हफ्ते का समय जरूर लगता है फॉर देम टू शो इम्प्रूवमेंट. 4 हफ्ते से लेकर ये जर्नी 8, 12 या 16 हफ्ते तक चल सकती है, जब तक उनको अपने मूड्स में एक डिस्टिंक्ट अंतर जो है नजर आने लगेगा या इम्प्रूवमेंट जो है नजर आने लगेगी. So thank you, ma'am. So my next question is to Dr. Mayna. So I would like to know that can it be treated without medicine? I think to understand this, we have to understand कि depression कौन से range में है. Is it a clinical depression या फिर it is just the mild feeling that I am depressed? अगर clinical depression है तो yes, medicines are needed and we have very good medications. We have different ranges of medicines. We have different therapies that can be done. But अगर depression mild to moderate है, जिसमें पहले हम try करते हैं, जब भी आप जाएंगे तो पहले therapies होती है, support groups होता है, वो जब नहीं वर्क करता है देन वी शिफ्ट देम टुवर्ड्स मेडिसिन. ओके. तो हाँ, मेडिसिन के बिना भी डिपेंड्स ऑन द रेंज. अगर वो बहुत माइल्ड है तो यस इट कैन बी ट्रीटेड, और अगर जरूरत पड़ती है तो मेडिसिन इंपॉर्टेंट है, सेफ है एंड दे सकते हैं. ओके. So thank you so much for answering such valuable and insightful information for our viewers. So now I would like to know, ma'am, so I would like to ask you to give a takeaway message from this session. So Deepika, ma'am. राइट. सो मेरा टेक अवे मैसेज यही रहेगा सभी को कि प्रेगनेंसी is overall a blessing. It's a beautiful state which meant to be enjoyed. However, at the same time, आप इस मैसेज को, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं या थोड़ा लो फील कर रहे हैं तो घबराइए मत. नथिंग इज रॉन्ग विद यू. यू आर नॉट अ बैड मदर, यू आर नॉट अ बैड वुमन. डोंट टेक इट वेरी पर्सनली. उस चीज को किसी से शेयर कीजिए, आपके पार्टनर के साथ, फैमिली में किसी के साथ या दोस्त के साथ, कि दिस इज हाउ यू आर फीलिंग एंड रीच आउट टू द राइट हेल्प. सो एंड उसके बाद जस्ट एंजॉय द सपोर्ट, एंजॉय द जर्नी. और उस जर्नी में आप ये समझ के चलिए कि आपको सपोर्ट की कदम कदम पे जरूरत पड़ सकती है एंड डोंट बी शाई अवे फ्रॉम आस्किंग फॉर हेल्प. आई थिंक हम लोग बहुत ज्यादा एज वुमेन वी टेक इट ऑल ऑन आवरसेल्फ कि अब हमें ये सब खुद करना है. सो आई थिंक वहाँ उस मान्यता को कहीं थोड़ा सा लोअर डाउन करने की जरूरत है. अपने दोस्तों को, अपने पार्टनर्स को, अपनी फैमिली को अपना साथी बनाइए, शेयर कीजिए और उस जर्नी को एंजॉय कीजिए. So thank you so much, ma'am, for this beautiful message. Now I come to Dr. Mayna. What's a takeaway message from you for our viewers? Okay, so I think what Dr. Deepika has said is मतलब absolutely correct. 2 मंत्र है जो आपको याद रखना है. सेल्फ केयर, आपको आपकी केयर करनी है, बिकॉज इफ यू विल केयर फॉर योर सेल्फ, आप आपके बेबी की केयर कर सकते हैं.
So self Absolutely. care and second is ask for support. सब कुछ आपके ऊपर नहीं है, you are not alone, आप already बहुत सारा load ले रहे हो. So ask for support, ask for help, stay back. It's okay if you're not feeling okay for some days, which is absolutely perfect. कुछ भी है, प्लीज बाहर आइए, अपने पार्टनर से, फैमिली से, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, जिससे भी आप कंफर्टेबल है, सपोर्ट के लिए पूछिए और खुद का ध्यान रखिए. So these two things, I think, अगर आप ये करते हैं throughout the pregnancy, you will enjoy the best phase of your life. So this is true. This is absolutely true. So thank you so much, ma'am, for joining us today for this live session. This was truly insightful, helpful, and very useful for all the new moms and expecting mothers. So thank you taking out your time to join us for this live session. So I thank all our viewers to who have joined us today, and thank you our experts for sharing so many helpful pointers for us. So on this note, I'm ending a session. So, and do keep following Baby Chakra and me, Kanika Khanna Bhatia, mom influencer. My Instagram handle is Kanika Khanna Bhatia for more parenting tips and for more parenting useful information. So, thank you. Thank you, Thank Kanika. you.